Okay, so we are back with yet another episode of Hall of Fame Reward. So, as you know very well, that in this Hall of Fame Reward, we recognize and appreciate those members who have got learning outcome with the sub-mastery learning. Of course, it's majorly, I think, that it's their effort, and we have been just acting as an enabler. So, today I would like to welcome Govind. Govind, welcome you in the Yeah, thank Hall you, of Fame sir. Reward. Thank you so much, sir. So, Govind, tell me a bit about yourself. Like, how was your journey before? And what were the kind of challenges which you were facing? तो एक बार आप मुझे इसके बारे में हमारे लर्नर्स को बताइए कि किस तरह का चैलेंज आप फेस कर रहे थे एंड बिफोर दैट before we proceed, like I would like to know like what kind of result you have got. We were just talking a few minutes back. So what kind of result you got? Like how much increment have you got in this new job? Thank you so much, sir, for giving me a great opportunity to have interaction with you. After a part of rather than a coaching or class only, because I always attend a class or coaching from you. That time you are a group for me and teacher for always and mentor. I'm always learn a lot of things also regarding systematics, regarding standards and regarding QMS, regarding IATF, regarding Lean Six Sigma, and everything, whatever the tools I'm learning from SubMastery. So I thank you. I want to say thanks a lot to you, Mr. Arun Sharma sir, and all SubMastery team. Yes, sir. Definitely. When I joined 3 years back to SubMastery as a new joinee, so that time I was not much deeper. Means I was not means aware about specific things related to IATF, ISO, what is that QMS, and that all things. But when I joined and I learned a lot things, then I started to learn step by step, one by one is course as an internal auditor, as a awareness course basic. Then after joining, I got two jobs. In 2022, got a new job as a senior engineer. There also I got 40% hike after completion of 1 year. Then again I returned to other job as a assistant manager and with 55% salary hike. And this is a great opportunity to have been working with automotive as well as non-automotive to complete transform at non-automotive business to automotive, and that is all core responsibility is my. And I'm also doing a great there by means whatever I learning practically as well as case study as well as theoretically, whatever courses whatever I learned from so much, so that all things are definitely, sir, it helpful for me to get this job. And I always want to say that yes, definitely a person as an engineer always learn. But definitely, sir, the thing is that on daily time, on daily basis, I'm learning in 8 to 9 or 8 to 11. That schedule is very busy with only my submaster classes only. So for daily basis, I learn these things. And what because I also want to say one thing that rather than these. Means when I learn from submaster, there I have to pay a very small amount of payment rather than other, because I saw huge amount I need to pay, but in small amount I am getting here everything, and that all things I need to do on practically. Then only I will proceed with the same as a mastery of that subject. But definitely for yes, sir, that thank you. I'm so happy, Govind. Like you just told that you got like into non-automotive, and now you are again back to automotive sector. And especially if I saw I remember that you always wanted to come back to the automotive. And in a way, if you look at in the first, we also interviewed I think 1.5 year back or last year Yes, yes, when sir. you got this increment, and you said that 55 that time and 55 this time and 45% 40% that time, so that means almost in a period of around 1.5 year or so, one year, 1.5 1 year, I believe, roughly 1 year, you got almost 95% salary hike. So you are in a case study Yes, where you have yes, almost yes, doubled your salary, because so many yes, people think that how can I do that, and people do that in 3 year, 5 year, 8 year time.
But what you have Yes, done yes, sir. in a just a period of around close to 1 year, you almost double your salary. I think that's a miracle, Yes. and that's really unheard of and very difficult for a person to get. So tell me something about that your journey when you went to non-automotive, because there are so many people who are willing to get in non-automotive. Nothing bad in that, but then again, how you came back to automotive. So tell me a bit about that journey. Sir, actually, I was in automotive only, but here business is complete non-automotive. Whatever I joined one of the industry, that global aluminum. So here, complete business is non-automotive. Complete peoples are working here one from non-auto background, and that is my total core responsibility. Transform non-automotive to automotive, Okay, and this is a very major challenge, sir. And for that specific purpose and specific role of working position, so I have get selected. very And good. sir, this position was not a means simple to get it join out to get recruited. Many people are already interviewed. Among that all peoples, my boss has been selected me. And special again, I want to say one thing is that I got a special increment, sir, for the year. Special means Wow. in they never give like this percentage of hike to anybody. Again, promotion like assistant manager directly. Oh my God. So With this, okay, I I think you from in the same company. Okay, you which you joined the same company. You got 1 year back 40% salary hike, and the same company now you are promoted to assistant manager. no sir, no sir, no, Uh, not same. Different company. Previously other one, previously Okay, right. I different, understand now. and now That after 1 year the different one. Wow, that's good. Which means that now you are working. You think that the people should, as you said, that in a automotive sector only, but in a that department or that section is basically supplying to non-automotive customer. That's what we want to say. And now you have responsibility that you need to implement the automotive culture in that non-automotive division. That's what you want to say, and that for that reason, the boss or the recruiter gave you special attention. Is that you want to say? Yes, 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 sir. Perfect, perfect. Okay, so how do you think? Like, I understand that people who are coming from automotive background and knowledge, especially like they are very much liked. I've seen that they are liked in telecom sector, even like in the chemical, or even I have friends of mine who worked in automotive manufacturing and mechanical. Even they worked in working in the improvement department in the Lean Six Sigma and other department in the manufacturing excellence, in the even in pharma. Like somehow I realize that people who are coming from automotive background, they have bigger scope and they have bigger maybe respect in the marketplace. So now you tell me this one thing that this is like you double your salary in 1 year. So have you ever thought that this is possible before when you were working in the previous jobs? Have you ever thought that this is possible, that you can like grow too much or you can quickly grow to this height? Uh, Definitely, I will say no, sir, not possible. Because when I was doing a simple regular job, so that was means routine job only as a job person. But rather than as an engineer, other than as a mechanical engineer, as an system engineer, I want to do or I want to learn something specifically market what wants from specific like multi-skill. Then again, must be aware about all the business practices, business best practices. Then again, related to understanding and implementation of specifically QMS, IATF, again VDS 6.3, VDA tools, so whatever the customer specific requirements, understanding, drafting of procedures, manual policies, and that all things. And definitely, sir, I learn a lot and all the things practically, theoretically, as well as case study from SubMastery only. And I'm also learning a lot things from SubMastery on daily basis. This is not a means one time Yes. learning approach or learning activity. It is a daily ongoing process, because with this approach only I can learn and I can utilize in my daily routine practice. And definitely, sir, when I will use it, when I will theoretically understand specifically interaction as an Q&A session, when I've been having as an Q&A session
with SubMastery team as well as all the coaches, then I definitely I always get a different, means good solution rather than one single solution, different solutions, different angle solution. Then again, I Google it, I search it with all the standard practices. So that is the best culture here with SubMastery. So that I always learn, and that is helpful for me for getting this job. And And I again, I want remember. to say one thing is that after 3 months completion, I got also confirmed here. And now I have responsibility to lead, means more than 3, 4 senior engineers who have completed more than 6, 7 years. They are also more aged than me, but I am Wow. leading all these teams. So yes, they are having knowledge, but definitely I am leading. It means I am also having some different, and I am having also approach to through that. So as a team, we are working on this. How many people are reporting to you now? How many AM and team members are reporting to you now? Not presently, no anyone reporting, but definitely, I'm taking care of their work. Means Oh wow, that's good. I'm guiding there, and I'm before they reaching to my superior boss. First of all, I'm taking review of their That's good. activity work So daily routine basis, I understand that and you have to always lead and guide them, and that's really wonderful. yes. And because and one thing is specifically, we are specifically working on implementation only, not just Mm. a document and not just a record. Wow, that's Implementation, which good. means complete implementation, like implementation, effectiveness, sustenance, and records. When at actual, the person or the process owner at time at his own, he need to do that all things. God, that's really good. And I think, Govind, what I liked about you, I remember that you always used to ask so many questions, in any of the session with other different experts and trainer also, in my session also, which shows that you are interested, and it's really is, good about any student or learner is that if he's asking question, that means he's interested, he want to learn more. And I've seen so many case studies and people who are participative and who ask question, even now that you are a ultimate quality member in that membership, and you Yes, are also part yes, of the Discord community where like you can yes, also interact with others. So I really yes. found this interesting that you are so participative. So now that you have got to a certain level and now you are assistant manager, and of course with this 55% salary like now and then 40% a year back. So with this, so how the other people in your community and other people in your family, how they see you? Because yesterday I was talking to one of our learner, Chintamani. He now got into the, he got this position of a lead auditor in a certification body. He was telling that when he was studying in the night, family used to say, "Yeah, what are you doing? You are still studying? You are not spending time with us." Maybe when you are studying is let's say 8 to 9 or 9 to 10 session, or sometimes it goes up to 10:30, 11 also. So, like, what is your family reaction then, and now what is your family reaction now? Yes, sir. Same, sir. Because when after me, previously, at first time when I joined as an IATF just awareness basic course, then again I joined IATF internal auditor course. Then again I joined 5 portal complete package. Okay, so all that courses was live and complete in the night, from 8 to 11 o'clock in the night. And that time I also was at my home only. So that time my family was asking me, what you are doing completely in the night, looking and taking all their notes, whatever you are learning. But is there anything means it is be beneficial really for you in future or in present case? So I was I was not means like that person. Yes, yeah, definitely it will be helpful. I just was calm and just replied him, yes, it will be helpful, but I do not want to say much more right now. But definitely in next 1 2 years you will get to see practical results. So definitely now they are also more happy to by seeing this all the whatever the I got options, opportunities, and with all things. And again, always many MNC companies approaching me. Always they look at my profile. They always trying to call me specific purpose positions. But so definitely, I'm doing best whatever I'm doing with work in an organization. So that is a best thing that I never don't miss.
Yes, I always discuss as one person, but what we say, uh, I mean, I'm not depend on any person Yes. because I have much more my SubMastery community and I joined here. So SubMastery, all the teams and all coaches are here to guide me and support me even anywhere but 24/7, and they are replying me. So that is the best option. And because more than 25, 30 years of experience and that mentors are available here, so that is a great experience, I think, for me. And you most of the time, like in the industry, in the corporate world, the seniors are busy, they don't have time. Even there are some people Yes, who have the knowledge, but they don't want to share because they fear that this person will take my job, this young engineer will take my job. So there is yes, a yes, kind of yes, this yes. culture in the organization. So then it becomes very And difficult for people to learn. yes, yes, and I faced a lot of times for this same thing. And same, I faced means I cannot say here specifically, but I faced this situation a lot of times. In But that I case, don't engineer gets stuck, know. from where he will learn. Because Ah, seniors are not supporting, outside training program seniors are not very costly, offline training is very very costly and not costly, possible to take very leave from costly, the sir. job. And that too we found ineffective. Like if you're doing only 1 day program and 2 days program, they cram everything. It's not possible. It has to be like the way Not you possible. learn step by step in a structured way. Now, since Yes, we made that recording available, we do this twice in a week, we do this live session and doubt clearing session also. yes, So yes, now we have yes, sir. also improved our structure a lot. Of course, it's not that it's 100% perfect, but we are also improving. So now you No, see sir, that. it is definitely 100%, sir, for me. Actually, I Mhm. don't know for other person because I am working person and I am working professional as well as I am also busy with my routine work. But sir, in the night, in the day end, after 6, 7 o'clock, I am free for my personal life. Okay, so I can give these times for my specific learning purpose. And definitely in the weekend, like Saturday and Sunday, specifically, these 2 days are completely blocked for SubMastery learning courses only. And I have given this time, sir, because I need to give my time, then only I will get something. Yeah. हम जो कहते हैं ना सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो खोना तो नहीं है बट कुछ पाने के लिए थोड़ा टाइम निकालना I mean, पड़ेगा and वो बेटर है we have seen a pattern like the whosoever got interviewed and whosoever like got this kind of increments and get a result. So we have seen a pattern. Like what is that pattern? That these are the members who have put additional efforts and who have shown up. Like they have either watched from the recording, they have come to live classes, they have put the efforts, they have done the implementation activities, or they have done some practice. So what I found a pattern because we are doing this for last 4 years. I think June 2019 we started. जून 2019 में यस स्टार्ट किया था इट्स बीन मोर देन 4 years वी आर डूइंग ऑनलाइन बिफोर कोविड वी स्टार्टेड ये नहीं कि कोविड हमने स्टार्ट किया था एंड आई फाउंड दिस पैटर्न कि जो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं और एफर्ट्स पुट कर रहे हैं दे आर गेटिंग रिजल्ट सो व्हाट वुड यू दिस बेसिकली शोज दैट देयर इज अ लाइक अ पैटर्न व्हिच इज देयर दैट अगर आप एफर्ट्स पुट करोगे यू गिव योर टाइम लिटिल बिट यू नीड टू सेक्रीफाइस योर पर्सनल टाइम और वो टाइम कौन सा निकालना है the time which you are spending on social media, time you are spending on watching reels, यस time which you are यस spending on यस YouTube, OTT platform. मत देखो उसकी जो नई सीरीज कौन सी मिर्जापुर की आ रही है वैसे तो मैं एक बार देखी आई ओनली वॉच वंस मतलब दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट ओटीटी सीरीज इट्स दे हुक यू राइट वो तो आपको बांध देते हैं बिकॉज दे आर गेटिंग मनी फॉर दैट आफ्टर आई डिसाइडेड कि मे बी आई ऑल्सो वॉच वन मोर फिजिक्स वाला उसकी मैंने देखी थी बिकॉज फॉर जस्ट इंस्पिरेशन सो व्हाट आई थिंक कि if it's a inspirational story or something like that oh ठीक है entertainment is okay but you are spending like let's say 12 1 a.m. in the night or 2 a.m. in the night you are watching and then how you will have that energy to learn right or of course वहां पे तो ओटीटी में जो प्लेटफॉर्म आजकल आ रहे हैं तो दे आर ट्राइंग टू होल्ड द यंग गाइज बाय शोइंग लव सेक्स धोखा एंड ऑल दैट कि भाई बंदा चिपका रहे और उनका रेवेन्यू बढ़ता रहे बट एट द एंड ऑफ डे हु इज एट लॉस तो वो जो चीज है कि वो मोटिवेशन कहाँ से आता है थोड़ा मुझे बताओ कि ये थोड़ा सा कि लड़कों में लाइक इन दी यंग इंजीनियर्स how they will like I'm not telling boycott the OTT or Netflix something like that of course entertainment is also important but वो मोटिवेशन कहाँ से आया कि नहीं यार मुझे स्पेंड करना है मुझे इन्वेस्ट करना है अपने समय को तो हाउ डू यू से कि वो मोटिवेशन कैसे आप में आया
हाँ सर, ये मोटिवेशन तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया 2019 या 20 में कुछ ज्वाइन किया था, हम्म। तो इसी टाइम में मैंने थोड़ा सा ही लर्निंग शुरू कर मतलब लर्निंग सीखना शुरू किया था, थोड़ा सा ही। ज्यादा तो मैं टाइम दे नहीं पा रहा था, बट जब जब मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत, जैसे इसके बिना मैं जी नहीं। As an engineer, I do not have any value in market or in my job place also. जब मैं ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी केस स्टडी, छोटी छोटी पॉइंट्स, लाइक हम बहुत बार बोलते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट रिकॉर्ड, बट ये क्या होता है, कैसे बनता है, किस लिए होता है, इसका पर्पस क्या है, इसका यूटिलाइज डेली रूटीन प्रैक्टिस में क्या है, ये कुछ पता ही नहीं होता है। बट ये जब मैं यहाँ पे लर्न करता हूँ, छोटी छोटी बेसिक बेसिक थिंग्स। यस सर, स्टैंडर्ड बहुत है, स्टैंडर्ड मार्केट में मिल भी जाते हैं, किसी से Yes, बात करने के कोई भी शेयर कर सकता है। बट वो स्टैंडर्ड को सर समझना और पढ़ना और अंडरस्टैंडिंग करना इतना आसान नहीं है। हमें उस पर थोड़ा सा सबके साथ डिस्कस करके, एज एन कम्युनिटी बात करके, एक थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करके, थोड़ा थोड़ा लर्न करके, इम्प्लीमेंटेशन करके आगे प्रोसीड होना है। और ये बहुत मुझे बेस्ट सर मोटिवेशन रहा है, इंस्पिरेशन रहा है। इसकी वजह से ही मैं आगे प्रोसीड होते होते मेरी एक वैल्यू खुद के लिए बढ़ रही है। बाकी किसी के लिए सर बढ़ रही या नहीं, मुझे तो उसका मैं किसी के लिए वो सोचता भी नहीं हूँ, बट मैं खुद के लिए खुद का कंपेयर करता हूँ। आई ऑलवेज कंपेयर माई सेल्फ ओनली। very good. देन कल मैं कैसा था, आज मैं क्या हूँ। कभी भी मैं छोटी छोटी, जैसे अभी ये एक बहुत बड़ा अच्छा है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो लाइव क्लासेस भी मेरे लिए रिकॉर्ड्स मैं बाद में देखता हूँ। और वही क्लास जो मैं अटेंड किया है लाइव, वही क्लास, जैसे अभी मैं थोड़ा सा एसपीसी का मुझे रिवाइज करना था, नितिन सर का। एसपीसी का मैंने आपका अटेंड किया है, दोनों में ऐसा पूरा मतलब, कभी कभी अभी मैं रूम पे रहता हूँ अकेला, खाना बनाता हूँ, खुद खाना पकाता हूँ। बनाते बनाते सर मैं एक पूरा 2 घंटे का लेक्चर खत्म हो जाता है 30-45 मिनट में स्पीड अप करके, और मैं पूरा खाना भी बनाता हूँ। तो ये मेरे लिए, तो ये तो बहुत बिकॉज जबरदस्त आई बात है। ऑलरेडी नो द अप्रोच बट आई लर्न, सो आई जस्ट रिवाइज इट कंप्लीटली। और सब आप बड़ा अच्छा, आपने कुछ काम करते करते कर लेते हो। तो आप मे भी खाना बना रहे हो, आप यस सर, यस सर, ट्रैवल कर रहे हो, उसमें कर लो, रिवाइज उसमें कर लो। यस यस सर। एंड दैट नीड टू बी रिक्वायर्ड सर, बिकॉज देखो देखो काम, दिमाग, इंसान का तो दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है, हर सारी चीजें दिमाग में फिट रहे। भूल सकता है, भूलना एक इंसान की फितरत है, नहीं, मतलब एक वो होता ही है। ये है। तो कुछ चीजें के लिए हमें माइंड में भी क्या रखना है, जरूरी क्या है, छोटी छोटे, तो वो कंसेप्ट, वो अंडरस्टैंडिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन, पर्पस करने का तरीका कैसा है, केस स्टडी में कैसे अप्रोच दिया जाए। तो ये बहुत मतलब ये बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है। और बाकी कहीं भी जाओ तो सर मुझे मैं दूसरे भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है छोटे मोटे कोर्सेज के लिए, बट वहाँ पे बहुत पे करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अमाउंट। जैसे यहाँ पे अभी अल्टीमेट, मैं तो अल्टीमेट ज्वाइन भी किया है कुछ, उस टाइम मुझे स्पेशल डिस्काउंट मिला था जी। 12,000 में। हम्म। और पूरा कोर्सेज आज 15,000 में है, वो यस, डेफिनेटली इट हैव सम वैल्यू। बट अभी वैल्यू उतने कोर्सेज भी है, 50-80 है, 150 कोर्सेज उसमें इतने मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, नहीं मिलते। कोर्सेज भी है, उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा डिफाइंड है, और हर टाइम सर अवेलेबल है, छोटी छोटी चीजें बहुत विद केस स्टडी है। तो ये मेरे ख्याल से तो कहीं मिलता नहीं है, और ये सब इतना सारा कुछ है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन प्लस इंस्पिरेशन रहा है, और हमेशा है। तो इसके थ्रू मैं डेली लर्न करता हूँ छोटी छोटी कंसेप्ट। और जरूरी है सर, क्योंकि क्या है, स्टैंडर्ड भी बहुत है, स्टैंडर्ड के अमेंडमेंट्स होते रहते हैं कंटिन्यू, उसका एडिशन भी कंटिन्यू आते आ रहता है। तो ये हर टाइम स्टैंडर्ड की वेबसाइट विजिट करना, उसका लर्न करना नहीं, एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल है। व्हेन यू गो एट IITF, FAQ है, SIs है, ऐसा ही everything है, is available सेक्शन इंटरप्रिटेशन। with SubMastery. So why need to go any to have a review and कभी इसका किसी के साथ डिस्कस करने पर भी कोई बताता नहीं है, छोटी ये कंसेप्ट, ये नॉलेज की सर बातें होती है ना, तो किसी के साथ ज्यादा शेयर भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको लगता है अरे यार ये तो हमेशा यही रहता है।
वो बोलता है टाइम पास की बातें करो यार, बस बहुत हो गया स्टडी। हाँ। कुछ स्टडी की बात, कुछ मूवी की बातें करो, कुछ सोशल मीडिया की बात करो, कुछ ये करो। इससे अच्छा हमारा रूटीन लाइफ कैसे इम्प्रूव होना, या मार्केट में हमें जो जॉब रोल, सर देखिए 10 12 8 घंटे तो हम देते ही है जॉब के लिए। जी जी। 30 मिनट डेली क्यों नहीं दे सकते उसी 8 घंटे को अच्छे से लर्न करने के लिए? दैट इज बेटर। आई थिंक जो आपने बोला, जो दो तीन चीजें मैं कैच कर पा रहा हूँ कि एक तो जो समय है वो निकालना पड़ेगा, डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड दी लाइक टाइम आउट ऑफ योर शेड्यूल। और दूसरा, लाइक फॉर रिवीजन यू कैन देन कंबाइन इट विद दी ऑफ कोर्स द अदर एक्टिविटीज। मे बी आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप और कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, देन यू कैन यू नो देन आल्सो रिवाइज। एंड थर्ड थिंग यू टोल्ड दैट बिकॉज all the case studies activities, not many material is available, and that is also updated. It's not that ki जैसे like sanction interpretation we are updating यस। that sanction. I mean, now in next few days we'll be launching a new, even in fact a separate course of sanction interpretation of IATF. So great यार, ये तो मतलब I'm really happy that people like you, engineers like you, you know, really makes a lot of difference in their lives and also motivate others. So एक चीज मेरा और क्वेश्चन है, लाइक कोई ये भी सोच सकता है, somebody can also thought this यार, ये जो आप एक साल में आपकी ऑलमोस्ट 95% सैलरी हाइक हुआ, ये तो वैसे भी हो सकता था, मतलब विद एज हो सकता है पढ़ के ना होता, वैसे भी हो जाता। तो इज इट लाइक लक से हो जाता, या फिर नहीं ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया तो हुआ है? तो इसमें क्या कहेंगे जो पीपल ये कहेंगे नहीं यार ये तो मेरा हाइक तो वैसे भी हो जाएगा, एक दो साल में अपने आप ही हो जाएगा। तो इसमें व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा पॉसिबल है कि अपने आप भी हो जाएगा, या फिर वो एक आध लक्की होगा जो अपने आप हो जाएगा या पढ़ के और मेहनत करके? यस। मैं तो यह कहना चाहता हूँ सर, लक रहता है। हम्म, लक लक है ना। लक जब हमारा अच्छा हो, हमारा प्लान अच्छा हो, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा हो, उसके साथ ही लक रहता है। लक और वर्क, ये दोनों सर एक ही मतलब एक ही नाणे की दो साइड है। जब काम वर्क का अच्छा रहेगा तभी वो लक रहेगा। बट ओनली लक वी कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड दैट इज मीन्स समथिंग, कुछ एक्स्ट्रा कर एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्स्ट्रा उसका कुछ बेनिफिट चाहिए तो डेफिनेटली लक इज नॉट, ओनली लक इज नॉट पॉसिबल। विथ स्पेसिफिक अप्रोच है, कुछ डिफाइंड स्ट्रैटेजीज है, कुछ डिफाइंड टाइमलाइन टारगेट डेट्स है। जैसे अभी हम सर IIT ऑफ इंटरनल ऑडिटर का कोर्स करते हैं और वर्कशॉप करते हैं दोनों भी, तो हमारा टोटल सर 30 डेज का है। मतलब 30 हम डेज का कोर्स है मोर देन हमारा। 90 आवर्स, हाँ, तो मोर देन 90 आवर्स हम पूरा लर्न करते हैं। और यहाँ पे कुछ पोस्ट किया जाए तो वो 8 8 घंटे 2 दिन में क्या पढ़ाता है? आई आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज मोर देन 90 आवर्स एंड जस्ट 8 16 आवर्स, तो हाँ, हमारे सब वेरी मिला के गुड मतलब मैं IATF कंपैरिजन। कोर टूल सब मिला के हमारे 90 आवर्स से ऊपर का ये ज्यादा ही हो जाएगा आई थिंक, हाँ। सब लगा लूं, लीड हम्म। इम्प्लीमेंटर लगा लूं तो वो तो शायद 150 100 125 घंटे के भी कोर्स हो जाएंगे और सारा मिला के यस हमारा अल्टरनेट मेंबरशिप भी कम से कम आई थिंक 350 घंटे से ऊपर का कोर्स है वो। यस यस यस। तो तो ये जो आपने कहा मतलब ये लक लक काम नहीं करता, लक मतलब प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू लक। प्रिपरेशन करनी होती है, ये अपॉर्चुनिटी यस, आपको मिलती है तो आप वो कन्वर्ट होती है। बराबर है सर। प्रिपरेशन जब होगा तभी अपॉर्चुनिटी होगी, और अपॉर्चुनिटी प्लस प्रिपरेशन होगा तो ही लक का कुछ बेनिफिट हमें रिजल्ट मिलेगा। Because without preparation or without having some potential things, we even don't get any opportunity. Because some person always sir, हर किसी को आज मल्टी स्किल चाहिए। खुद खुद मतलब क्या बोलते हैं कि एक सेल्फ लर्निंग वाला एटीट्यूड भी चाहिए। क्योंकि ये हर जगह पे हमें तो कुछ लर्न करना होता है, बट जगह पे हमें कुछ पोटेंशियल थिंग होगा तो ये आगे प्री रिक्विजिट नॉलेज, प्री रिक्विजिट कंसेप्ट कुछ है तो ये आगे प्रोसीड हो सकता है। बिकॉज एज एन जस्ट फ्रेशर एंड सो इन मार्केट में सर देखा भी जाए, आज मैकेनिकल इंजीनियर कुछ भी फ्रेशर रहे, उसको कुछ भी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, मैं क्यों? देखता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त है फ्रेशर्स है, मुझे बहुत सारे पूछते हैं अरे कोई जॉब है क्या, कोई जॉब है क्या, कोई जॉब है क्या। प्रेशर रहेंगे तो कुछ स्किल्स नहीं रहती है, बट कुछ काम करते करते हम कुछ स्किल्स को अचीव करेंगे तो डेफिनेटली सर इट एड्स मोर मोर वैल्यू, एंड वी कैन नॉट मेजर इट। यस। वी जस्ट काउंट मेजर इट आफ्टर हैविंग सम रिजल्ट। ये बड़ी जबरदस्त बात कही कि आदमी तब तक नहीं रियलाइज करता अनलेस अनटिल ही और शी गेट सम काइंड ऑफ रिजल्ट। यस सर। और सर सबसे बड़ी बात मैं ये तो बोल सकता हूँ कि आपने मतलब आप जस्ट कोर्सेस कोचिंग
यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा फ्री में सब मिलता है, जैसे कम्युनिकेशन है, इंटर प्रिपरेशन है, जैसे आपको कुछ एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करना है कुछ, उसका भी पूरा मटेरियल यहाँ पे है, वीडियोस है, वीकली उसके सेशन चलते हैं। उसके बाद में आप बहुत बड़े बड़े एमएनसी ग्रुप के क्वालिटी हेड, डीजीएम, जैसे वो प्लांट हेड रह चुके हैं, उनका आप एक इंटरव्यू सेशन रखते हो, लाइव सेशन हमारे, हम उसको उनके साथ डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, सो दैट इज अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म हियर सर। वो आईआईटी में हम सोचते हैं सर कि वहाँ पे कुछ सुंदर पिचाई आके आईआईटीएंस को ट्रेनिंग दे दे, या मतलब एक बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये ऐसा ही प्लेटफॉर्म हो गया सर। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा कुछ नहीं है जो मैन्युफैक्चर जो में समाज कर रहा अदर है। अदर जगह पे कहीं तो है ही नहीं, बट यहाँ पे तो ये भी है कि आप बहुत बड़े बड़े मतलब सीनियर पर्सन को आप कॉल भी करते हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ एज ए मतलब वो भी एक शेयरिंग एक्सपीरियंस हमारे लिए भी बेनिफिट होता है, तो Yes. ये एवरीथिंग इज देयर सर। सो व्हाई नीड टू गो एनी अदर प्लेस, एंड दिस इज वेरी बिग इंस्पिरेशन प्लस मोटिवेशन, बिकॉज किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती है, हम यहाँ पे बहुत अच्छा कूल माइंड रख के सब कुछ लर्न करते रहते हैं। तो ग्रेट यार गोविंद, मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। और जो भी अभी वीडियो जब ये जाएगी नेट पे, तो सारे इसको शेयर करो यार, इसको सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो, स्टोरी शेयर करो। व्हाई वी आर शेयरिंग दिस स्टोरीज, बिकॉज वी वांट टू गिव यू दिस मैसेज, इट इज पॉसिबल, एंड व्हाट मिस्टेक्स वी आर डूइंग, सो दैट you can learn from our mistakes. Why we are interviewing people like him, those who are getting almost this kind of hike and promotion, इनमें क्या अलग है? तो ये कोई बाहर से नहीं उतरे, दीज आर पीपल लाइक यू, बट दे हैव सम, दे फॉलोड सम स्ट्रक्चर, दे फॉलोड सम सिस्टम, एंड फॉर दैट रीजन दे गॉट द रिजल्ट। तो बिल्कुल कमेंट में आप इसे यूट्यूब पे वॉच करेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर करें गोविंद को। गोविंद, बहुत मजा आया यार, रियली आई रियली फाइंड दिस कन्वर्सेशन enjoyable, and I'm very much sure कि you will keep on adding value to your family, your organization, and also to nation. And thank you very much for coming यस to this यस सर, platform. definitely sir, all everything is possible with my knowledge, with my effort, but definitely by the help and support always from SubMastery team, especially from you sir, because I always directly interact with you, and you I got within 1-2 minutes reply from you, so that is a great for me. Thanks, Govind. All the best. Thank